थर्ड एप्लीकेशन वाले फाइनली सुना दीजिए। थर्ड एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे? प्रीवियस विड्रॉ है दोनों। ठीक है, फाइनली सुना दीजिए ना। मेरिट पर सुना दीजिए। 304 बी में इसको हाँ, पनिशमेंट जी मेरिट पर सुनाइए। 304 बी में पनिशमेंट है माय लॉर्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, 8 साल से ये जेल में है। देख लिया तो वकील साहब, जी। पढ़िएगा, पैरा 2 से पढ़ना चालू जी करिए। सर। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अभियोजन साक्षी हाफिज मोहम्मद पैरा 3 कर दिया। कितना? अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 2/5/17 को सुबह 8:15 बजे डॉक्टर आशीष पांडे आपको द्वारा पति है ना, शेख मजलूम पति हैं? जी। बेटा भी मर गया ना इमरान? जी सर। बेटा भी खत्म हो गया ना? सर बेटा खत्म हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक उसका नाम हम बहस नहीं कर रहे, आपसे पूछ रहे बेटा भी खत्म हुआ ना उसका? सर वो उसका कुछ भी इसमें नहीं आया है सर। FIR में लिखा हुआ है सर मैं इसके लिए सर अपने बेटे इमरान के साथ जलकर खत्म हो गई है। जी सर। इसकी जिम्मेदार शेख मजलूम होना बताया आप सर कह रहे हो कुछ है ही नहीं सर इसके लिए मैं पैरा पैरा नहीं, आप अपने क्रम से बताओ क्वेरी की। सर वो पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूँ सर। 87 पैरा है जजमेंट का। यह भी विचारणीय है कि मृतका मदीना बी का उक्त पुत्र जीवित है या उसकी भी वर्तमान घटना में मृत्यु हुई है। उक्त संबंध में प्रकरण में कोई विवेचना किया जाना और मृतका के पुत्र की कोई MLC या पोस्टमार्टम होना अभिलेख से दर्शित नहीं है और उक्त संबंध में विवेचना पूर्णतः मौन होना दर्शित होती है। लेकिन अभियोजन साक्षी हाफिज मोहम्मद जमील के अनुसार मदीना बी के पुत्र की भी उक्त हादसे में मृत्यु हो गई थी। अभियोजन साक्षी अब्दुल जलील के अनुसार सरकारी अस्पताल में से आरोपी ने बताया था कि मदीना बी का पुत्र उसका भांजा इमरान भी जल गया है और आरोपी ने बताया था कि तुम्हारी बहन और भांजा जल गए हैं। जब उसका समझ गया, छोड़ दे। चलिए अब आप सर आइए, पैरा 2 पढ़िए। जी। तो पैरा 3 में है। पैरा 3 पढ़ लीजिए। जी। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 2/5/17 को सुबह 8:15 बजे डॉक्टर आशीष पांडे द्वारा जिला अस्पताल पुलिस चौकी कटनी को सूचना PSP 18 भेजी गई कि मदीना की स्वयं से आग लगाना बताया गया है, जिस कारण महिला को गंभीर स्थिति में इलाज हेतु जिला चिकित्सालय कटनी में भर्ती किया गया है। कब विवाह हुआ था मदीना बी का? ये सर 2 साल के अंदर सर। ये ठीक है। सेकंड मैरिज थी सर। चलिए आगे चलिए। दोनों की MLC PSP 11 संलग्न है। तहसीलदार विजय कुमार द्विवेदी द्वारा दिनांक 2/5/17 को जिला चिकित्सालय कटनी में मदीना बी का मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध किए हैं। दिनांक 2/5/17 को सुबह 8:50 बजे डॉक्टर नरेंद्र खानदानी द्वारा जिला अस्पताल पुलिस चौकी कटनी को सूचना PSP 8 भेजी गई कि मदीना बी को जम जाने के कारण इलाज हेतु भर्ती हुई थी। उक्त मरीज को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मरीज सिलेमनाबाद EHC से रेफर होकर आई है। दिनांक 2/5/17 को 11 बजे डॉक्टर नरेंद्र खानदानी द्वारा जिला अस्पताल पुलिस चौकी कटनी को सूचना PSP 9 भेजी कि उक्त महिला आग से जल जाने के कारण उच्च स्तर पर हेतु मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर की गई, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। 8 बजे की सब घटना है, 11 बजे इसकी डेथ। अस्पताल पुलिस चौकी कटनी के आरक्षक मंसूर हुसैन द्वारा उप निरीक्षक साधना विनोदिया द्वारा जारी कर्तव्य प्रमाण पत्र PSP 6 एवं शव परीक्षण आवेदन PSP 9A के आधार पर मृतका का शव परीक्षण जिला चिकित्सालय कटनी में कराया गया। डॉक्टर नरेंद्र धामदानी द्वारा मृतका का शव परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट PSP 9 इसमें सर डाइंग डिक्लेरेशन भी है। हाँ, वो है एग्जिबिट P7 और विटनेस है इसके PW12 PW5 PW5 डॉक्टर PW5 डॉक्टर हैं। डॉक्टर नरेंद्र धामदानी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये कहते हैं मैं दिनांक 2/5/17 को जिला चिकित्सालय कटनी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत मुद्दे की बात पर आइए वकील। सर पैरा 2 से सर 2/5 सुबह 8:50 बजे मेरे द्वारा जिला अस्पताल पुलिस चौकी कटनी को इस आशय की सूचना भेजी गई थी कि मरीज जल जाने के कारण इलाज हेतु भर्ती हुई थी एवं मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मरीज सिलेमनाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर होकर आई थी। उक्त सूचना PSP 8 है, जिसके हस्ताक्षर है। 2/5 को ही समय सुबह 11 बजे मैंने जिला अस्पताल पुलिस चौकी कटनी को इस आशय की सूचना भेजी थी कि उक्त महिला आग से जल जाने के कारण उच्च स्तर पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर की गई थी, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। शव को शव परीक्षण कक्ष में रखा गया है। उक्त सूचना PSP 9 है, जिसके आशय पर मेरे हस्ताक्षर है। फिर सर उन्होंने ये PM पूरा बताया कि ये जला हुआ एक समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चलिए बताइए सर। क्या डिफेंस क्या है आपकी? सर इसमें मेरा एक तो ये है कि जो इसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी जी। डॉक्टर साहब ने तहसीलदार साहब ने उसका सर ना कोई अंगूठा लगवाया है और ना ही दस्तखत करवाए हैं। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसके दोनों हाथ जले हुए हैं, इस कारण से हमने उसका अंगूठा नहीं लगवाया या दस्तखत नहीं ना अंगूठा लगवाया ना पढ़ के सुनाई। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किया। और उसमें लिखा हुआ है कि दोनों हाथ जले इस कारण से हस्ताक्षर। सही है सर। सवाल ये पैदा होता है कि DD झूठा कैसे हो जाएगा मत लिखते पे? सर अब 3 घंटे में उसकी डेथ हो गई थी। 8 बजे वो जली है और 11 बजे उसकी डेथ हो गई। तो टाइमिंग का भी सर इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। कह दिया ना, ऐसा नहीं है कि 100% जली तो कथन देने की योग्य नहीं। हाँ सर वो तो कहा है। डिफेंस कई वकील साहब आपने? सर डिफेंस इसका यही है कि फॉल्सिटी इम्प्लीकेशन का है सर, क्योंकि ये सेकंड मैरिज थी इसकी। कितना है इसमें सेंटेंस कितना है? लाइफ मिनिमम करने
भाई माता पिता ने क्या कहा इतना बड़ा मैं तो ही मदीना मेरी बहन 10 कर दे रहे Here, this appeal is filed being aggrieved of judgment dated 7th September 2019, asked by learned Sessions Judge Khatni in Sessions Case number 142/2017, whereby appellant Sheikh Majloom has been convicted under Section 304B IPC. So, along with Section 306, 498 AI, 498A IPC, and Section 4 of Dowry Prohibition Act with the following sentences लिखा दीजिए. Next, it is submitted that appellant for that for the victim it was second marriage has been convicted under these sentences and has been sentenced under Section 304B with life imprisonment and fine of 1,000. He has been sentenced under 304B with life imprisonment and under Section 4 Dowry Prohibition Act with 6 months RI and fine of rupees 1,000 with default distribution of 1 month RI. Next paragraph. It is submitted that for the deceased, this was second marriage. PW1 has admitted that earlier her marriage was performed with Rizwan. Full stop. Rizwan was not keeping her will, and therefore she obtained a divorce in the presence of the members of the society, and then she was married to Sheikh Mazloom. Full stop. Next one. It is pointed out that PW1 has not said anything about demand of dowry, but has said that after death of his sister, he was informed that appellant was not keeping her will. Full stop. Next paragraph. It is further submitted that dying declaration exhibit P7 does not inspire confidence in as much as Dr. PW5 has stated that she had sustained cent% burns. Full stop. PW12 Nayab Tehsildar 2 has admitted that her hands were burnt as a result of which her thumb impression could not be obtained on the dying declaration exhibit P7. Next paragraph. Shri. डॉक्टर P6 भी हैं? डॉक्टर 6 भी है आशीष पांडे अच्छा मरीज ने बताया कि उसने स्वयं आग लगा ली है अच्छा thank you. Full stop. It is pointed out that PW6 डॉक्टर आशीष पांडे Dr. Ashish Pandey सेकंड पैर stated that disease had informed him that she had put herself on fire. Full stop. Thus, it is submitted that a case of suicide has been converted into that of murder and appellant dowry death, and appellant has been wrongly convicted under Section 304B IPC. Next paragraph. It is also submitted that looking to the medical condition of the injured and the fact that she was burned at about 8 a.m. and her dying declaration was recorded about 10 a.m., whereas she died at about 11 a.m., reveals that all these documents are concocted and have been prepared just to support the case of the prosecution. Thus, the same. Next paragraph. Shri Nitin Gupta, learned counsel for the appellant, submits that there is no infirmity in the impugned judgment calling for interference and therefore prays for maintaining the conviction and sentence. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the उनके ऊपर एक लिख लेना in the alternate. Shri, your Narendra Tiwari. जी सर. Narendra Tiwari submits that sentence be reduced to 7 years as is the minimum prescribed sentence under Section 304 IPC. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, dying declaration exhibit P7 is recorded by PW5 is recorded by PW12 in presence of PW5. Full stop. In this dying declaration, deceased Madina B admitted that she had put herself on fire out of anger. Full stop. Later on, she stated that her husband used to taunt her for not bringing sufficient dowry, as a result of which she used to feel harassed. Therefore, she put herself on fire. There is a certification by the concerned Dr. Jamnani, PW5, to this effect, that she was in a fit condition to give her statements. Next paragraph. PW1. ब्रदर हाफिज मोहम्मद जमील. PW1. Shri Hafiz Muhammad Zamil is brother of the deceased Madina B. He is elder brother of deceased Madina B. He has not supported prosecution case, though he stated in his examination in chief that after death of Madina B, his parents had informed him that Sheikh Mazloom was not keeping Madina B properly. Next paragraph. PW2 Abdul Jalil stated that his sister had once informed him that her husband was giving him trouble. Full stop. Later on,
only full stop. He improvised his statement stating that Madina B had informed him that he was demanding money and therefore he used to harass her. Full stop. He has admitted that he was younger to Madina B. Full stop. He had lot of attachment with Madina B and she used to ask him to take her back as conditions in her in-laws house was not proper. Full stop. In cross-examination, this witness has denied a suggestion. He has admitted that no talaknama was given in regard to first marriage of Madina B with Rizwan. Full stop. This witness admitted that no or panchayat of relatives or social panchayat was ever convened in regard to demand of rupees 50,000 and motorcycle by the appellant. Full stop. He has also admitted that Madina B was not having any separate phone and she used to call from the phone of her husband only. Next para. PW3 Zulekha B is mother of a deceased. Full stop. She too has supported the demand of dowry and she has stated that accused used to demand money and in condition of non-fulfillment of such demand used to threaten to kill his daughter. Full stop. He has said that there was demand of rupees 50,000. Full stop. Same fact has been supported by PW4 Mansoor Hussain, who Mansoor Hussain is the father. नहीं सर ये आरक्षण But father nahi. Same fact hata दिया. She has admitted in cross-examination that her sons Hafiz, Mohammad Zamil and Abdul Jalil are her sons who are residing separately for last 10-12 years. Hafiz Zamil is staying at Badwara and Abdul Zameen is residing at Katni Piparia. He has also admitted that whenever Madina used to visit her in parental house, she used to visit Zamila B and was not visiting anybody else. Full stop. She has also stated that Madina B was not in conversation with anybody else, but used to talk to her only. Full stop. Full stop. This witness too has admitted that after birth of child, Madina had visited her and thereafter parent had taken her back, and for last 4 months after her vidai, there was no talk between Madina B and Zulekha B. Full stop. Full stop. She also admitted that no panchayat was convened in regard to demand of dowry or motorcycle. However, the fact of the matter is that dying declaration exhibit P7 is proved by not only PW5 Dr. Narendra Dhamnani, who has categorically stated Madina B was in a fit state of mind to record a dying declaration. Full stop. Same fact has been stated by Dr. Ashish Pandey, who stated that Ashish Pandey, PW6, who stated that Madina B had informed her that she had put herself on fire. She was fully conscious. Full stop. दीदी का क्लोज दूसरी नंबर पे कैसे हुआ मैंने गुस्से से आग लगा ली वो चल रही Full stop. She has also stated that when he asked her, then she stated that out of anger she had put herself on fire and then shouted. Full stop. PW12 Naib Tehsildar Shri Vijay Kumar Devedi, whom has supported the statements of the prosecutor's declaration and therefore in the light of the law laid down by Supreme Court in Purushottam Chopra and another versus state bracket में government of NCT of Delhi 2020 का 11 SCC 489 with principles which have been laid down in relation to recording of dying declaration and its admissibility and reliability, which are reproduced for convenience as under 1 से 8 तक reproduce कर दीजिएगा 489 490 पेज पर. Then it is evident that dying declaration has remained unrebutted. There is no iota of doubt that the dying declaration is not genuine. Full stop. Honorable Supreme Court has categorically stated that the percentage and degree of burns would not, by itself, be decisive of the credibility of dying declaration, semicolon, and the decisive factor would be the quality of evidence about the fit and conscious state of the declarant to make the statement. Full stop. Thus, when these statements are taken into consideration, when the dying declaration is taken into consideration in the light of the law laid down by Supreme Court in Purushottam Chopra, then it cannot be said to be not reliable, and therefore, when examined, then
demand of dowry is though proved, but immediate demand of dowry is not substantiated, as can be seen from the statements of PW3 Julekha B, mother of the victim, Madina B, and their Madina B, full stop. It is next part. It is true that the incident took place within 2 years of marriage with the present appellant, and there is an allegation of demand of dowry. Therefore, conviction under section 304B is affirmed. But looking to the typical facts and circumstances of the case, and there being suggestion given to the witnesses PW1 and PW2 that there was no formal divorce from the first husband, namely Rizwan, and thus there was an element of pressure on the deceased on account of absence of such formal divorce. We are of the opinion that the sentence needs to be modified from one of life imprisonment to 10 years. 304 सीधे साथ साथ conviction recorded by trial court is affirmed. ठीक है ना? Under 304B and 4/4 dowry provision act, but sentence is modified from life imprisonment 10 years RI, and conviction under sentence under section 4 is meant 4 dowry provision act is maintained as such. And about terms appeal is allowed. Both the sentences to run concurrent. Appeal is allowed in part and disposed. English objection acceptable. और ये जो है ना वो सब हटा देना, IS निरस्त कर देना, हर्ट फाइनली कर देना. Pending,